Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you will be enjoying the best of health. I welcome you in my class. That is an English for grade 5. We are learning unit number 9, Murree, the Queen of Hills. Yes, my dear teachers and my dear students, I have divided my whole chapter according to this lesson plan and according to this lecture, week 1 lecture and week 2 lectures. So let's see that. Our first lecture, lecture number 1, under the title of grammar, we will learn about adjective and we will cover up page 82, 83 and 84. And lecture number 2, under the title of also grammar present continuous tense, we will learn about, and on page number 84 and 85. So lecture number 2, under the title of grammar compound words, we will learn about in lecture 3 compound words, and we will learn page number 86. This is our lecture 3. And lecture number 4, reading comprehension, we will cover up page number 79 and 78. And lecture number 5, also there is comprehension, and we will cover up remaining our half chapter lesson and page number 80. And under the title of lecture 6, under the title of listening and speaking, we will cover up page number 87, question number 9. And our lecture number 7, expository paragraph, we will learn how to write a paragraph, and we will cover up question number 10 on page number 87. Yes, my dear students, and lecture number 8 is letter writing, and we will cover up page 88 and sample letter, and question number 11 we will cover up, and this way we will complete our chapter, we will complete our unit. So yes, let's start now with our chapter. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in Quran, Surah Al-Mujadila, verse number 11 and Surah number 58. And when you are told to rise up, Allah will raise up to suitable ranks and degrees those of you who believe and who have been granted knowledge. So yes, my dear teachers and my dear students, so this beautiful verse is explaining that, telling us that Allah will give high ranks, and Allah will give success to those persons who have knowledge about Islam, who have knowledge about Al-Quran, and who have knowledge how we have to spend our life according to the teachings of Islam. So definitely that person will be successful in life. So this beautiful verse is also telling us about the importance of knowledge. So yes, now we are going to start our lecture, unit number 9, Murree, the Queen of Hills. Yes, my dear teachers. So theme of this lesson and sub-theme of this lesson. Theme of this lesson is nature, travel and transport, adventure. Sub-theme is hills, rivers, lakes, plains, deserts, mountain, etc. Taking a tour, cable car or lifts. So this whole is telling us how we can visit and we can get new adventure while visiting the natural beauty that Allah has blessed. Natural beauty everywhere, and especially in Pakistan, in our country, there is natural beauty, and we are going to discuss that. And this theme is hills, rivers, lakes, plains, deserts, mountains. These all are natural things that are made by Allah Almighty. So how we can get that? So let's start our chapter. So yes, open book, page number 79 is there. We are going to start, my dear students. Recreational trips and tours provide us pleasure and freshness to increase our capacity to work and study. We experience new and challenging situations. We also meet many kinds of people and learn about their customs and traditions. In short, trips add more to our understanding and knowledge about different areas and people. Murree is one of the most visited hill stations in Pakistan. It is like a fantasy town for those who live downwards to Murree.
Yes, my dear students, so this beautiful paragraph is telling us about कि कैसे हमारे ये तफरीही जो मकामात होते हैं ना, तफरीही सैर और तफरीह जो हम करते हैं, तो वो कैसे हमें दिलचस्प, और जब हम अपनी बिजी रूटीन से थक जाते हैं तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और ये आप लोगों को भी करनी चाहिए कि अपने सैर के लिए कहीं अच्छे खूबसूरत मकाम पे जाना चाहिए, कि क्योंकि जब हम अपने रूटीन वर्क, डेली रूटीन वर्क से इंसान थक सा जाता है, तो ये सैर व तफरीह करके इंसान फ्रेश हो जाता है और उसमें काम करने की सलाहियत भी मजीद बढ़ जाती है। तो इस पर यह है कि यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ कौन सा है हमारे पाकिस्तान में, कौन सा विजिटिंग पॉइंट सबसे अहम है, वो है मरी। मरी बहुत ही बेस्ट विजिटिंग पॉइंट है, जो हम उन लोगों के लिए जो मरी से दूर दराज इलाकों में रहते हैं और गर्म इलाकों में रहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन जगह है विजिट करने के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया जा रहा है मरी के बारे में। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री कम टू विजिट दिस ब्यूटीफुल रिजॉर्ट टू एस्केप from the severe heat of the summer. Lush green mountains covered with trees, cold atmosphere, fresh air, beautiful valleys and fog on the roads are the main attractions of Murree for us. I had never visited any hill station before. तो यहाँ बेटा यहाँ अपना एक नैरेटिव अपना खुद बता रहा है, एक बंदा बता रहा है, अपना तज्जिया बता रहा है कि उसने पहले कभी भी मरी विजिट नहीं किया था, लेकिन जब उसने किया तो उसने क्या कुछ फील किया, इसमें ये वो बताया जा रहा है। यहाँ मरी के बारे में बताया जा रहा है, वहां क्या है, लश ग्रीन माउंटेन्स, हरे भरे सरसब्ज पहाड़ हैं, कवर्ड विद ट्रीज, और पहाड़ों पर ही दरख्त उगे हुए हैं, कोल्ड एटमॉस्फेयर, ठंडी फजा है वहां, फ्रेश एयर, ताजा हवा, और गर्द आलूद और आलूदगी से पाक हवा है, एंड ब्यूटीफुल वैलीज, खूबसूरत वादियां हैं, और रोड पर क्या नजर आता है, फॉग, धुंध नजर आता है सर्दी की वजह से। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन मरी की ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से हर इंसान खींचा चला जाता है कि मरी जाएं। और समर, टू अवॉइड फ्रॉम द सीवर हीट ऑफ समर, गर्मियों की शदीद गर्मी और शिद्दत से थक हार के जब हम वहां जाते हैं तो हम बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। So next, last year, पिछले साल, I got a chance to visit Murree, the Queen of Hills. अब मरी को क्या कहा जाता है बेटा, Queen of Hills means पहाड़ियों की मलका। मरी को क्या कहा जाता है, मलका कोहसार, पहाड़ियों की मलका। इतनी खूबसूरत प्लेस है ये। As some of my friends were planning to visit it, they also invited me to accompany them. After making all necessary preparations, we took a train from Karachi to Rawalpindi. After a day's rest, we left for Murree by bus. The journey up hills was very delightful. The ascent was full of turns, and trip was quite different from that of in the plains. तो यहाँ वो क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है कि जो ट्रिप मैंने किया मरी की तरफ, तो वो क्या था, बिल्कुल डिफरेंट था, मुख्तलिफ था। वो ट्रिप, वो तफरीह या वो जर्नी, सफर जो हम मैदानों में करते हैं, मैदानी इलाकों में रहने वाले करते हैं, तो पिछले साल उससे क्या मिला, चांस बना, उसके दोस्त कुछ जा रहे थे तो वो भी तैयार हुआ, और वो कराची से रावलपिंडी में कैसे आए, एक ट्रेन के जरिए आए। एक दिन की का रेस्ट किया, उसके बाद मरी के लिए रवाना हुए बाय बस। बस के जरिए वो मरी रवाना हुए, और देखते हैं कितना ब्यूटीफुल और खूबसूरत सफर रहा उनको। हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज माय डियर स्टूडेंट्स। यकीनन आपके दिल में भी ख्वाहिश हो रही होगी कि हम भी जाएं। सो इंशाल्लाह वी विल मूव, यू विल आल्सो मूव विद योर फैमिली एंड वी विल मूव टू। वी रीच्ड मरी एट अबाउट 3 PM. It was a fine, clear and pleasant day. We were lucky enough to get a rest house on a reasonable charges. We were rather tired, so we settled ourselves comfortably. तो कब पहुंचे वो पहुंचे 3 बजे। 3 बजे वो मरी पहुंच गए, और मरी पहुंचने के बाद उन्होंने, वो बड़ी ही प्यारी सुबह थी, बड़ा ही प्यारा टाइम था जब वो पहुंचे, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट किया, और उनकी खुशकिस्मती ये कि उनको हल्के दामों में, रीजनेबल चार्जेस में मींस बेयरेबल, जो वो एक्सपेंस बेयर कर सके, तो उनको एक रेस्ट हाउस मिल गया जो उन्होंने लिया, रेंट पे लिया, और उन्होंने रेस्ट किया। एंड नेक्स्ट, द फॉलोइंग मॉर्निंग वी केम आउट टू व्यू द हिल्स. The scenery was charming with feathers of lovely colors. The little birds were singing sweet songs. With wings of the most beautiful colors, butterflies could be seen flying from flower to flower. A variety of lovely color flowers and beautiful ferns
were a source of delight too. I kept on breathing the pleasing fragrance for quite some time. I wished that I had a hut there. Yes, my dear students, यहाँ वो क्या बता रहा है, वो अपने एहसास, अपनी फीलिंग बता रहा है जो वहां उसने जाके महसूस किया। वहां उसने क्या कुछ देखा, वहां उसने देखा कि इतने खूबसूरत रंग बिरंगे परों वाले परिंदे वहां उड़ रहे थे और रंग बिरंगी तितलियां एक फूल से दूसरे फूल पे। इतना मंजर खूबसूरत और प्यारा था और इतनी फ्रेश ताजा हवा थी कि कितनी देर मैं, वो बता रहा है कि मैं सांस लेता रहा उस ताजा हवा में। I wish that I had a hut there. अब उसकी एक ख्वाहिश उठी दिल में कि काश उसका वहां एक हट होता, मकान होता, छोटा सा झोंपड़ा होता जिसमें वो रहता और वो वापस ही ना आता। इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है मरी बेटा। So open next page number 80. The houses were built irregularly and very often the top of one was in level with the door of the other. It was very interesting. We walked and walked. At last, we came to Kashmir Point, a beautiful spot with a lovely view. It was a new experience, so I watched everything with utmost attention. Yes, बेटा, तो क्या बता रहे हैं, वहां घरों के जो स्ट्रक्चर थे वो इरेगुलर थे। मींस किसी का मकान की किसी की छत है तो किसी का मकान शुरू हो रहा है, तो इस तरह थे। बिकॉज पहाड़ों पे ऐसे ही बनते हैं, बिकॉज होल प्लेस इज लाइक अ हिल स्टेशन, तो पहाड़ों पे मकान ऐसे बनते हैं। और वो बता रहा है कि इतने खूबसूरत लगते हैं, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू व्यू, कि उसे देखना बहुत ही दिलचस्प लग रहा था। आखिरकार वो चलते रहे पहाड़ों पे, तो वो कहां पहुंचे, कश्मीर पॉइंट। तो कश्मीर पॉइंट को कश्मीर पॉइंट क्यों कहा जाता है? ड्यू टू इट्स ब्यूटी, ड्यू टू इट्स चार्मिंग एंड विद द लवली व्यू। इसके खूबसूरत मंजर की वजह से इसे कश्मीर पॉइंट कहा जाता है। और वो बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस कि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था किसी पहाड़ी इलाके में जाने का, तो मैं हर चीज को ऐसे गौर से देख रहा था कि ये जैसे मेरे लिए एक न्यू हो, बिल्कुल ऐसे देख रहा था और खुशी भी हो रही थी। So next, at dawn, the rain stopped. The sun rose in its full glory, investing the trees, flowers, hills, birds, and beasts with a golden light. After our breakfast, we went out to see the Assembly Sanatorium down in the valley. Assembly is a beautiful little spot situated in a fine valley. The entire area is covered with thick pine trees. The next day, we plan to visit Petriata. यस बेटा, इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि जब हम सुबह उठे तो बारिश सारी रात होती रही। जब सुबह उठे तो बारिश थम गई, सूरज निकला और उसने जब अपनी सुनहरी किरणें पहाड़ियों पे, दरख्तों पे और उस पूरे नज़ारे पे डाली तो मंजर देखने के काबिल था। तो नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि हमने नाश्ते के बाद खूबसूरत वादी में गए जो मरी से नीचे पहाड़ों में ही थी, उसे कहते हैं असेंबली सैनिटोरियम। हम वहां गए, वहां जाके बहुत ही खूबसूरत प्लेस है और पूरा इलाका पाइन ट्रीज, अल्पाइन दरख्तों से ढका हुआ है। पहाड़ों पे दरख्त उगे हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं बेटा। सो नेक्स्ट देखते हैं उन्होंने नेक्स्ट डे क्या किया, प्लान किया पेट्रियाटा को विजिट करने का। आफ्टर 1 hour जर्नी वी गेट देयर एंड बॉट आवर टिकट्स फ्रॉम द केबल कार। फॉर द केबल कार इट वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस फॉर अस। इट वाज कैप्टिवेटिंग टू लुक डाउन सिटिंग इन द केबल कार। The view beneath simply seemed to be from a fairyland. At last, we reached Petriata Hills at 3 p.m. We enjoyed our delicious lunch. We stayed there till 5 p.m. We rode horses and took tea. After this, we took some photographs of the beautiful scenes. Yes, बेटा, इस पैराग्राफ में वो क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि 1 घंटे की मुसाफत के बाद हम कहाँ पहुंचे, हम गए और वहां से हमने केबल कार की टिकट ली। यहाँ आपको बेटा इस पिक्चर में देखें, आपको नजर आ रही है ना, ये केबल कार है। इस केबल कार में बैठ के आप पूरे मरी का, पूरे पहाड़ी इलाके का नजारा कर सकते हैं और ये बहुत ही दिलकश होता है। इट वॉज सो कैप्टिवेटिंग, मीन ये बहुत ही दिलकश था, दिल फरेब नजारा था। जब हम केबल कार में बैठ के नीचे की तरफ देखें तो ये बहुत ही दिल फरेब और दिल को खुश कर देने वाला मंजर। तो कहाँ 3 बजे वो वहां पहुंचे और उन्होंने बहुत ही डिलीशियस मजेदार सा लंच किया। 5 बजे वो वहां 5 बजे तक वहां पेट्रियाटा हिल्स में रहे। वी रोड हार्स एंड टुक टी, और वो घोड़ों पर भी सवार हुए, उन्होंने घुड़सवारी की, चाय पी और बहुत सी खूबसूरत मंजर की खूबसूरत तस्वीर भी ली। On our way back to Murree, we stayed in the Wonderland Park and reached Murree at night. The next day, we visited the adjacent valleys.
We stayed there for 4 days. Then we returned to our city. We had a lot of sweet memories of this memorable trip. Our photographs will keep this trip ever fresh in our minds in future. We got great recreation and experience from this trip. Yes बेटा, तो वो क्या किया, मरी से वापसी की तरफ वो एक वंडरलैंड पार्क में भी गए और वो मरी के इर्द गिर्द एडजेसेंट वैलीज मीन्स इर्द गिर्द करीबी सारी वादियां उन्होंने विजिट की, तस्वीरें ली। 4 दिन वो वहां रहे और जब वो वापस आए तो बहुत ही खूबसूरत और फ्रेश ताज़ा यादें लेके वापस आए। और वो यही बता रहा है कि सारी ज़िंदगी, ये पूरे मुस्तकबिल में, फ्यूचर में ये यादें मेरे दिमाग में, मेरे अंदर ज़िंदा रहेंगी जो कुछ मैं वहाँ देख के आया। सो इंशाल्लाह मुझे लगता है आपके दिल में भी ख्वाहिश उठ रही है कि हम भी जाएं, मरी की सैर करें। तो इंशाल्लाह चलेंगे। ओके, तो आज हम अपना सब चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो कल हम अपने लेक्चर नंबर 1 के साथ अपना ये पूरा चैप्टर दोबारा स्टार्ट करेंगे। सी यू सून फॉर टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।